One post, one tweet, one ad. That makes it all. Welcome to the cancel culture of India, जहां सोशल मीडिया साइट आपको 1 घंटे में वायरल करा सकती है, वही सोशल मीडिया साइट आपकी सालों की मेहनत बर्बाद कर सकती है. Death threats become real, and jail is just one hashtag away. The media becomes the judge, the Twitter becomes the court, and you are guilty until proven. But the question is this justice or a chaos amongst the hashtags? कैंसल कल्चर से आप क्या समझते हैं? आई थिंक कैंसल कल्चर इज कॉलिंग आउट अ सेलिब्रिटी या क्रिटिसाइज करना उनको ऑन स्पेसिफिकली सोशल मीडिया के थ्रू ही ज्यादा हुआ है रिसेंटली एंड दैट लीड्स टू देयर ऑस्ट्रेसाइजेशन, उनको मतलब बॉयकॉट कर देना एंड विच इट इज इन अ वे डिफाइंड बाय देयर ओपिनियंस, या उन्होंने कुछ पब्लिकली बोल दिया तो आउटक्राई हो जाता है एंड पीपल जंप ऑन द बैंडवैगन एंड फिर सब शुरू हो जाते हैं एंड देन एवरीवन जस्ट एसेंशियली कैंसल्स दैट सेलिब्रिटी. You know, the internet collectively calls somebody out. Somebody can be an influencer, a person, a person like you and me said something, did something over Instagram या फिर कोई भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो कोई कुछ ऐसा चीज़ बोल देता है जो कि कलेक्टिवली लोगों को पसंद नहीं आती है, तो उस चीज़ को कैंसिल कल्चर बोलते हैं. 2020, Sushant Singh Rajput dies. Within hours, internet has its villain, Riya Chakravarti. Gold digger, witch, murderer. She was found guilty until proven. That same year, Tanishq released an ad, Hindu-Muslim marriage. Natija, boycott Tanishq ad, vandalizing of the shops, death threats, and ultimately, Tanishq had to pull down that ad. You? Just because it promoted love beyond religion? Social media, which was once used to call out people, अब वही सोशल मीडिया मिसयूज और अब्यूज का जरिया बन चुका है. मीटू मूवमेंट के दौरान Hi, my name's Tarana Burke, and I'm the founder of the Me Too movement. the victims used the social media as a platform for power and strength. अब वही social media is now being used to troll people, ostracize them and boycott them. इन्हीं चीजों के बारे में बात करने के लिए I have called a very special guest, Mr. Tushar Goyal. Tushar sir is a media research scholar at JNU and runs a very famous YouTube channel called The Indian Mass Communication. Thank you so much, Prachi, for having me on your show. तो सर मेरा आपसे सिर्फ एक यही सवाल है कि आप व्यूअर्स को समझाएं कि आप कैंसल कल्चर के बारे में क्या समझते हैं, कैसे कैंसल कल्चर मिसयूज हुआ जाने लगा, एंड व्हाट आर द रेपरकशंस दैट अ पर्सन हु इज बीइंग कैंसल्ड हैज टू फेस. प्राची, जब हम कैंसल कल्चर की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना. इट हैज़ एग्जिस्टेड इन अदर फॉर्म्स सिंस एंशिएंट टाइम्स. अगर आप आज भी किसी नॉर्थ इंडिया में विलेज में जाओगे तो आप इस प्रैक्टिस के बारे में ज़रूर सुनोगे, किसी का हुक्का पानी बंद कर देना. सो दिस exclusion can be of several forms. It can be social boycott. When we talk about social boycott, you cut that person from all the social gatherings, rituals. It can be in the form of economic boycott. So you pull that support from that person in the form of scholarship, in the form of sponsorship, or people don't take their services anymore. Now with the emergence of this new social institution, which is social media, which has this amplification effect, this cancel culture has become an integral part of our digital discourse. Exactly. Cancel culture was never today's phenomena. पहले भी सोसाइटी में किसी का हुक्का पानी बंद करके उसे कैंसिल किया जाता था. That same cancelling has turned up to this trend of culture because of social media. But मेरा एक आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, that ये cancel culture has left all of us in that moral dilemma. जहाँ एक तरफ cancel culture gives voice to the voiceless, वहीं दूसरी तरफ यही cancel culture को एक weapon की तरह यूज किया जाता है to call out and pull down that person. So what are your views on that? जब हम कैंसिल कल्चर को मोरालिटी और एथिक्स के नज़रिए से देखते हैं
it comes with a significant paradox. So some critics, they suggest that it amplifies the voice of the marginalized people, it holds powerful people accountable. The best example can be of the Me Too movement, when thousands of survivors, they came out with their stories, when the formal institutions such as workplace committees, courts, they were not able to give justice to all these survivors. This social media gave them a platform to hold all those people, all those powerful people accountable. At the same time, scholars also observe that it also leads to cyberbullying and digital vigilantism. In many instances, it has been seen that some anonymous or unverified claim has gone viral, and it has led to a lot of hue and cry against a person or an institution which they didn't deserve. So sometimes it also erodes the due process, and there is very less scope of nuance. People do not understand the context of it. Thank you so much, Tushar sir, for briefing us about how it all started and also to analyze the pattern of this cancel culture. तो कि मान लो कोई क्लास में मिसबिहेव कर रहा है, हमारी क्लास की बात कर लें, आपको आपके नजर से क्या सही होगा? क्या सब बच्चे मिलके उसे पीटें वो सही होगा, या फिर टीचर उसको एक वाइबल पनिशमेंट दे वो सही होगा? So before I end this show, I want you guys to ask yourself these 3 questions before you end up cancelling somebody. Number 1, do I know the full story? Number 2, am I seeking justice or am I targeting that person? Number 3, and the most important one, कि अगर हम किसी को cancel या boycott कर रहे हैं and then we find out that the person is not guilty, so as an individual, are we willing to come on social media and apologize that person publicly? क्योंकि अगर हम उसे accountable ठहरा सकते हैं तो हमें खुद को भी accountable ठहराना होगा for the words we use. Comment down below what you think about this trend of cancel culture, and also follow Indian Mass Communication for more such videos. Thank you so much for watching.